न्यूयॉर्क में हैं, पिज़्ज़ा ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप क्लीन बोल्ड हो जाते हैं कि यार फ्लेवर समझाएं किस तरह से। जुनूनियत है इनके खानों में। काफ़ी गुस्से वाला बुल है, सामने नहीं आना इसके। Steam coming out of it. बत्तियाँ देख के everybody goes wow. Thundercats comics. बड़ी मजे का कलेक्शन है यहाँ पे. It's like really good collection of stuff over here. Assalamualaikum, namaste, sat sri akal, ahlan wa sahlan to all our friends and viewers around the world. Welcome to your favorite YouTube channel, It Just Spices. मैं हूँ इरफान, आपका मेज़बान. उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे. Another beautiful day in sunny New York City. तो चलते हैं, आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं at the search of taste, जायका and ज़ौक़ of New York City in USA. Let's go. Wow. तो आज का प्लान ये है कि थोड़ी सी साइट सीइंग करेंगे. चेक आउट दी टॉप, यू नो लाइक एक दो दिन है तो वही करना पड़ेगा जो हर टूरिस्ट यहाँ पे आके करता है. The same old, you know, like Statue of Liberty and Empire State Building and all that good stuff. So I'm trying to find out where to get the hop-on, hop-off bus. Because I think so that would be the best way to travel and explore all the top touristic destinations that are to be explored when you are in New York City. और उसके बाद देखते हैं whatever, you know, like street food that we can grab, so that we can just keep on, you know, like talking about the street food culture as well in New York. So yeah, but it needs to be halal definitely. So yeah, check करते हैं. सामने बस वाले नज़र तो आ रहे हैं, पूछते हैं उनसे भाई कि क्या पैकेज दे सकते हैं. So let's see. So yeah, again, right next to M&M's on 7th Avenue and West 48th Street, you can catch the big bus, hop on, hop off. I picked up my hop on, hop off pass from here, and that's the bus, waiting for another bus to come in, which is just right behind. So we're going to be hopping onto that bus. That's the map that you go on different places. So you're just going to keep on visiting and showing you all around New York City. My friend over here is pumped up. Yep. This job you have to get high a little bit. You need to. Yeah. Bring the energy. A lot of people drive you crazy here. Bring the energy, my friend. सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे on my right, that's the Times Square. इसको हमने कल रात को एक्सप्लोर किया था. हर वक्त कुछ ना कुछ करतब यहाँ पे हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं. आज जो है थोड़ा सा न्यूयॉर्क की ट्रैफिक के बारे में पता चल जाएगा हमें किस तरह की ट्रैफिक है यहाँ पे. द होल सर्किट जो है इनका फ्रॉम टॉप 1 back, like the whole loop basically is supposed to take 1.5 hours. We started our tour around about 4 बजे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है. So you got the famous Madame Tussauds over there, the Wax Museum, Dave and Buster. Madame Tussauds देखने का टाइम तो है नहीं. I think Madame Tussauds हमने विजिट किया था in London. It's pretty good. Wax statues of famous celebrities over there. ये जी आ रहा है जी यहाँ पे Koreatown. There's a shopping center over here, Koreatown shopping court. So all Korean shops over here. Next are a Flatiron district. इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं जी चाइनाटाउन की तरफ से. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं there's a lot of street vendors selling, you know, like replica gift items over here. That's when you know you're in Chinatown. You got Apple products being sold on the street over here, and obviously most of them are replicas. I wonder if they're getting it from Turkey, because Turkey mein during our Istanbul, you know, like food and tour vlog series, we went to Grand Bazaar और वहाँ पे बड़े अच्छे replicas मिल रहे थे, and they used to call it original replicas. Yeah, they used to call it original replicas over there. I wonder if यहाँ पे Chinatown में जो सामान मिल रहा है is from Turkey's Grand Bazaar or no. And now we are headed towards the Brooklyn Bridge. और ये हमारे सामने है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट हाउस, जहाँ पे सारे यू नो ऑर्डर वाले फैसले होते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट हाउस ओवर देयर. I think now we're headed towards Brooklyn Bridge, or we might see the Brooklyn Bridge. Yes, that's the Brooklyn Bridge over there. We are at the financial district where there's this charging bull right behind me. Again, a symbol of the financial district, quite popular here, and a lot of line up over here to get pictures and stuff done. So that's the charging bull behind me, a symbol of the New York Stock Exchange, which apparently just keeps going up. कभी भी स्टॉक एक्सचेंज नीचे नहीं जाता न्यूयॉर्क का.
I mean, there have been financial crashes and stuff, but again, this charging bull is a symbol of the bull run of the New York Stock Exchange. काफ़ी गुस्से वाला बुल है, सामने नहीं आना इसके, charging bull है. That's the New York Stock Exchange. 9/11 Memorial Ground की तरफ चलते हैं and वो चेक करते हैं. Okay, ji, in front of us is the newly constructed, basically, One World Center, built in memory of the people who lost their lives during the 9/11 incident. Basically, in the same area जहाँ पे कभी किसी ज़माने में World Trade Center हुआ करता था, the Twin Towers हुआ करते थे. सामने वहाँ पे देख सकते हैं कि जो Twin Towers थे, उसके area में they've made basically the memorial ground. All the people who lost their lives, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं. People come in over here, they put in flowers and stuff. As a sign of respect, as a sign of, remembrance, all the people who lost their life over here. And I clearly remember, like, September 9/11, 2001, I was in office, and then my fiance, जो कि अब मेरी wife है, मेरी director है, my life partner basically, she called me up and she said, are you watching the news? So, again, I was at work and I wasn't watching the news, but then I tuned into the news. News सुनी, पता चला कि क्या हो रहा है. And after that, the world has changed. Everybody knows what's happening all around the world. It's unfortunate, and again, life is too short. Live and let live. So I hope things get de-escalated soon, and the world becomes a better place to live for everybody in peace and harmony. And again, a moment of reflection for all the people who lost their lives during the events of 9/11. At the end of the day, war does not solve anything. Again, everybody should, learn to respect lives. I hope Allah करे हर जगह अमन हो, सब लोग हंसी खुशी रहें, अपने काम से काम रखें, and just get along, man. Just get along with everybody. नफ़रतें पालने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त. Live and let live. So World Trade Center, I'm not much of a mall person, but इस मॉल में आने की वजह ये थी because of its unique structure जो इसका बना हुआ है. नीचे जो है shops वगैरह भी हैं. I don't want to spend too much time in the mall though. Just want to check out कि अगर कुछ खाने के लिए अच्छा है तो just pick it up from here, because सुबह से just had 2 coffees, haven't had any food. So right now, running on the energy from Adil's shawarma जो काफ़ी late night खाया था. So running on the energy of the Adil shawarma. So Adil bhai, अगर आप देख रहे हो, your shawarma was good. It's still lasting and still providing energy to fuel this, walking tour and exploration tour of New York. Carve Cafe and Pizza. If you're in New York, you need to have a pizza, right? So a slice of New York style pizza. Different options over here, but unfortunately halal nahi hai, so we can't really go for it. I mean, they said the meat is halal, but it's not Zabiya halal. Halal options हैं, but again, let's play it safe. Okay जी, ये हमने लिया है यहाँ से New York style vegetarian pizza. तो काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं यहाँ पे जहाँ पे हलाल का बोर्ड तो लगा हुआ है, but खाना ज़बिया हलाल नहीं है. So make sure double check कर लें, तसल्ली हो जाए. कहते हैं ना, better safe than sorry. So yeah. So again, New York style pizza, because hey, New York में है, pizza ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता. Let's try. First bite, vegetarian slice of pizza in New York. Bismillah. Not bad. I approve. Crust काफ़ी thin है इसकी, and garma garam hai. You can see the steam coming out of it. So the crust is like a little bit crispy, thin. Cheese, really nice. Vegetables have got that crunch in it. I just realized it's my first slice of pizza in New York. So उसके लिहाज से अच्छा है. It's very nice.
काफ़ी सारे desserts के भी options हैं, some nice looking yummy desserts. They've got the New York style cheesecake, they've got strawberry with chocolate, eclairs, a lot of cookies over here, muffins, so all that good stuff. So just had a nice vegetarian pizza at Carve Cafe and Pizza. It's being run by Arabs, and when I asked the guy at the counter, right, that is the pizza halal, he said, Alhamdulillah, we all are Muslims and everything is halal. When I asked the main guy who was kind of, like putting the pizzas together, the head chef, Kele, he said that it's not hand slaughtered halal, it's just halal. So basically वही machine slaughtered वगैरह जो ज़बिया halal issue जो हमारे कनाडा में होता है वो issue यहाँ पे भी है. So just make sure, like because there's a lot of signs over here that say the food is halal and stuff, but just make sure, just double check कर लें. If you kind of, want to eat only Zabiya halal meat, just make sure that you check with them. So while walking around on the streets over here of New York, just stumbled across this store. It's called Midtown Comics. They've got 2 floors of amazing comic book stuff. They've got characters over here, back issues of comic books, latest comic books, whatever you guys want, you can get it from here. I mean, just look at this extensive collection over here that they've got. I don't have space in my luggage, otherwise I would have taken everything over here. I mean, serious collector's item stuff over here. They even have Power Rangers, G.I. Joe, Star Wars. These look awesome. Wow. Bunch of Loki characters over here. That's so cool. बड़ी मजे का collection है यहाँ पे. It's like really good collection of stuff over here. There used to be a time when I used to be, a collector of these comic books. I had like hundreds and hundreds of these. Especially the Amazing Spider-Man, Superman, Fantastic Four. Those 3 comic books, I never used to miss an issue. But then, you get busy with life, with things, and ये जो बचपन के शौक होते हैं वो पीछे रह जाते हैं. Thundercats comics. Okay जी, after geeking out in that comic book store, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, and I'm standing right now at something that's called Herald Square at West 35th Street, and यहाँ पे people are just sitting, chilling in the middle on the square. मतलब टूरिस्ट के लिए अच्छी खासी फैसिलिटी दी हुई है कि भाई अगर आप चल के शॉपिंग कर के थक गए हो तो थोड़ा सा यहाँ पे बैठ लें, खा पी लें, फिर उठें, फिर शॉपिंग करें. और यहाँ पे हर जगह रौनकें और बत्तियाँ लगी हुई हैं, और बत्तियाँ देखने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं कि वो देखो कितनी अच्छी बत्तियाँ लगी हुई हैं. तो बत्तियाँ देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं टू टाइम स्क्वायर, टू न्यूयॉर्क, एंड बत्तियाँ देख के एवरीबडी गोज़ वाओ, क्या बत्तियाँ हैं. Right now हम लोग जो है we're sitting over here at Junoon. इनका जो मेन्यू है बड़ा इंटरेस्टिंग है. They've got the like chef's tasting menu where you can pick like 5 items from mix and match. Then they've got something called the 2-course menu in which you can take a starter and a main, and then they've got a 3-course menu in which you can take the starter, the main and a dessert. Menu में क्या है? Let's have a look. Menu में options तो काफ़ी सारे हैं. Now, if you go for the chef's tasting menu, that's around $130 per person. थोड़ा सा महंगा, but again, it's a renowned chef. So in the chef's tasting menu, they've got different options. One side is the vegetarian options, the other side is the meat, non-veg options. And again, our friend over here was telling us that everything is halal. So yeah, all the halal food basically is coming in from Al Minar Halal Meats. So that's their meat supplier. So tuna puchka hai inke paas, which has got tuna, black salt, caviar, mint cilantro, jalzira, semolina puff. Interesting. Then they've got chiku mousse, Parle-G cake, coconut grass. Interesting. Then they've got the 3-course menu, which is for $98 per person. So $98 versus $138. The smoked masala ribs, which is over here, that's not halal. And then over here, he was saying in the mains, everything is halal except for the duck. So duck halal nahi hai, baaki sab kuch halal hai. And then again, they've got like, it comes with
dal, it comes with naan, it comes with dessert, all that good stuff. But $130 you can taste everything. So, क्या करना है? Let's go with the chefs. Yeah, let's go with that. So, हमारी पहली डिश यहाँ पे आ चुकी है, which again the server over here बड़े प्यार से वो लेके आए, and it's been presented in a frying pan style. It looks like an egg, but वो बड़े प्यार से समझा रहे थे कि ये egg नहीं है. There's cream and then there's mango in the center of it. So it looks like the shape of a fried egg, but it's not a fried egg. I mean, just look at the beautiful presentation. Frying pan के अंदर, tasting platter is here. Try करते हैं इसको. So this one is basically called, I don't know, pehla swad something he said. So let's try. Cream and mango. Wow. It looks like I'm breaking an egg literally. Tricky है थोड़ा सा खाना. So first bite, bismillah. What is this, man? It's really nice. Coconut cream. Yeah. Mango is spear soaked in orange juice. Orange juice. Okay. Coconut cream. Coconut cream. Mango spear. Okay. And then that have What's that spice that I'm getting? Like, is it white pepper, right? black pepper and white. Okay. Really interesting. Like, I've never had something like this. You know, it's called as it's not an egg. Oh yeah, it's not an egg. It's not a. But it's presented in the shape of an egg. It's really interesting. Very nice. I like it. So yeah, coconut cream के साथ बनी हुई, you know, like thick cream है. बीच में इसके जो है mango है. थोड़ा सा जो है black pepper, थोड़ा सा white pepper. It's creating this fusion, unique fusion of flavors. I mean, like I was saying, I've never had anything like this before. Totally bamboozled. Excellent. And जिस तरह मयंक कभी बता रहे थे, Mayank, who's, you know, like taking care of us, he took my order and stuff. Very nice guy. And again, he was saying the same thing. It's not an egg, and definitely it's not an egg. Really nice, you know, like palate cleanser, a teaser to, you know, like set up the mood that जो बाद में चीज़ें आने वाली हैं, they're going to be really, really interesting. So, very keen on trying out the other items from the chef and from the kitchen of Junoon in New York. So, जो पहले हमने भी खाया था, that coconut cream with the, it's not an egg basically, was basically like a welcome from the chef, welcome to my restaurant kind of thing. Just a starter. Now is the main things that have started coming in. So first of all, we have got the, I'll tell you what it is called, क्योंकि नाम जो है थोड़े से याद करना मुश्किल है. First time आया हूँ यहाँ पे. So this is the tuna puchka. Basically tuna है अंदर में, ठीक है. Tuna, black salt, caviar, minced cilantro, jalzira है, semolina puff है. Basically पानी पूरी का एक elevated version है, ठीक है. So what you do is, you take your semolina, pour the water inside the pani puri, pick it up, eat it in one bite. So try करते हैं the tuna puchka at Junoon restaurant. इससे अच्छी, I'm not exaggerating, इससे अच्छी पानी पूरी मैंने कभी नहीं खाई. पानी पूरी stuffed with tuna, cilantro, and even the पूरी जो है इसकी, जो crust है पूरी का, it's really nice. वो वाली जो थी वो tuna के साथ थी. This one is with caviar and again jalzira. Amazing, amazing, amazing. So that tuna, black caviar, puchka. I mean यहाँ पे हर डिश जो है ना, so far, I think so. Hashtag next level होने वाली है. जुनूनियत है इनके खानों में. That's all I can say. But how do you come up with these kind of concepts? You know, पानी पूरी के अंदर caviar डालना, tuna डालना, जलजीरा इतना मज़े का बनाना. Chemistry है, science है. And the chef over here,
knows a thing or two about blending flavors. Even though that the restaurant is pretty busy, the service is pretty good. एक के बाद एक चीज़ जो है ना फ़ौरन आती जा रही है यहाँ पे, and you know like the staff is also very attentive. जो भी लेके आ रहे हैं सामान, ठीक है ना, they explaining कि भाई अभी आप ये खाने वाले हो, इसमें ये चीज़ है, and they also you know like because again people come over here for the experience. Not many people know my desi dishes को किस तरह खाना है. So the chef came to me and he was like, should I explain to you how to eat a pani puri? मैं कहा नहीं यार, इतना आता है, फूड ब्लॉग्स करते रहते हैं, इतना तो आता है कि यार पानी पूरी किस तरह खानी है. और नेक्स्ट एपेटाइजर्स या मेन कह लें या टेस्टिंग आइटम कह लें, बेसिकली दिस इज़ दी जावेरी काई क्वांग या जावेरी काई क्वांग मैरिनेटेड लैंगोस्टीन पिकल श्रिम्प के साथ. सो ट्राई करते हैं ये भी. ये थोड़ा सा सर के ऊपर से गुजर रही है डिश, और I'm butchering it. Very nicely done. Shrimp. You can see the glisten of the meat, but the taste, wow. Again, if you're visiting New York, craving for Indian food, don't miss out. Junoon. Address इनका जो है is in the description box, or you can Google it. But आपकी आसानी के लिए I'm putting it in the description box as well. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 years in a row, Michelin award. Deserves it. Again, खाना स्पाइसी है, फ्लेवरफुल है, जिस तरह से हमारे देसी खाने होने चाहिए. It's got भरपूर, जिसे कहते हैं ना, भरपूर फ्लेवर. Excellent. Wow. So succulent, juicy, buttery, creamy texture of the meat. Amazing. और इसमें जो ये मैरिनेशन लगी हुई है, जो मसाला डाला हुआ है इसके ऊपर, अलग ही फ्यूजन है. And you can feel the heat in your throat. Pretty good. And it's good, you know, like going with the chef platter, the tasting menu. हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खाने को मिल रही है. अगर मेन्स कर लेते तो बस ये प्रॉन्स ही होता है, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 3 प्रॉन होते हैं, 4 प्रॉन होते हैं, बाकी टेस्ट पता नहीं चलता. In this way, you're getting to taste a little bit of everything, all his signature dishes. So, again, मर्जी आपकी, बट मेरी माने, if you're here, go with the chef's tasting menu. Let me know in the comment section if you have been here, what did you like at Junoon. So our next dish is here. Basically, it's a chicken dish served with basmati rice, bone-in chicken, made with lime and yogurt. And then he said there is walnuts in it. Walnut कहाँ से आया भाई? So it's basically summer chicken curry, bone-in chicken thigh, yogurt, garlic and lime sauce with basmati rice. So ये आपका sauce आ गई. The sauce looks pretty thick, and then you got 2 pieces of chicken boti, and then we have the basmati rice over here. So पहले chicken on its own try करते हैं. Let's try. Wow. Garlic और lime के साथ जो करी बनी हुई है, you can actually you know like taste the थोड़ा सा खट्टापन है, थोड़ा सा garlicky flavor है. Again, जो भी मैं अभी तक खा रहा हूँ, these kind of flavors मैंने नहीं खाए. It's completely different flavors. Yes, Indian food है, but it's on a different level. but ये next level से भी आगे next चला गया यार. थोड़ा सा राइस के साथ. Let's try the chicken dish. So, I think मैंने किसी एक व्लॉग में कहा था कि भाई खाने की जो स्पीड है आपकी,
वो खुद ही बता देती है कि भाई एक आपको भूख कितनी है, ठीक है ना, तभी आप जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है. सो अगेन दैट इज़ डेफिनेटली अ चेक मार्क. भूख तो लगी हुई है क्योंकि सुबह से बस 2 कप के कॉफ़ी के पिए थे, फिर वो पिज़्ज़ा खाए थे बीच में. भूख जो है ना बहुत ही टाइट किस्म की लगी हुई है, तो उसी वजह से खाने की स्पीड थोड़ी तेज़ है. बट अगेन भूख तो लगी हुई थी, बट जो फ्लेवर्स हैं इस खाने के, ओ माय गॉड, अलग ही लेवल पे, बहुत मज़े का है. मैंने पूछा था अभी कि भाई शेफ़ हैं, तो आई वुड लाइक टू मीट हिम, बट ही इज़ नॉट अराउंड, सो दैट्स अनफॉर्चुनेट. अच्छी एक गपशप हो जाती है उनके साथ. एनीवेज, नेक्स्ट टाइम. One thing that is good over here, the staff is well trained. They know clearly what items on the menu are halal, what is not halal, कहाँ से meat आ रहा है. They know the supplier. So if you ask anybody, they'll give you the same answer. So which is good. वो कहते हैं ना finger licking good. So this is basically spoon, fork, knife looking good food. What do we have now? Have another ghost chili korma. Okay. It's a lotus dumpling served with a saffron cashew sauce. ओके जी, हमारी जो है आई थिंक सो इट्स द लास्ट डिश ऑफ द डे. उसके बाद डिज़र्ट है. तो सफ़र कहाँ पे ख़त्म, मतलब कितनी जल्दी जा रहा है पता नहीं चल रहा. सो दिस इज़ दी नादरू कोफ्ता गोश्त चिली कोरमा, बेसिकली लोटस रूट डम्पलिंग, सैफरन कैश्यू गोश्त चिली सॉस, gunpowder tuili, I'm not sure what that is, and then basmati rice, and they've got the dal makhni as well. मतलब हर किस्म का फ्लेवर आपके यहाँ पे मिल रहा है. चिकन खाई हमने, प्रॉन खाया, एंड वी ऑल्सो हैड कैवियर. तो अब ये ट्राई करते हैं. फर्स्ट अगेन जस्ट द करी ऑन इट्स ओन. तो इसके सेंटर में जो है इज़ दी लोटस रूट डम्पलिंग. यस, डम्पलिंग्स बनाई हुई हैं विद द लोटस रूट. देयर इज़ दी गन पाउडर मसाले के साथ बना हुआ ये जो पेस्ट है, ग्रेवी है. इसके अंदर पीसेस ऑफ कैश्यू हैं, गेटिंग हिंट्स ऑफ सैफरन इन इट. इट्स अ बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स, बट गन पाउडर मसाला है. इट्स स्पाइसी एज वेल. एक्सेलेंट. थोड़ा सा राइस के साथ ट्राई करते हैं इसको. अच्छी तरह से ब्लेंड करते हैं करी को विद द राइस. मेरा दिल चाह रहा और भी चीज़ें मंगवाऊँ. एनीवेज, नाउ ट्राइंग आउट द लोटस रूट. Basically, I'm trying to make a reference, a connection to any flavor, any food जो मैंने पास में खाया हो, ताकि I can explain it better. But trust me, ये flavors पकड़ में नहीं आ रहे. It's different, very different. It's like I'm not in an Indian restaurant. I'm in some different country का restaurant जिसमें फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में इस तरह का कुजीन खा रहा हूँ मैं. वेरी नाइस. ये है जी इनकी दाल मखनी. इट्स एडेड टू द प्लेट एंड हैव वन बाइट ऑन इट्स ओन एज वेल, बिकॉज व्हाई नॉट. दाल मखनी बहुत जगह पे खाई है, तो इतनी मज़े की नहीं खाई. Very buttery, very flavorful, just the right amount of spices. So it's a nice, like neutralizer, because ये जो दूसरी वाली जो करी थी थोड़ी सी स्पाइसी है. दाल मखनी आती है आपकी ज़बान को, आपके टेस्ट बड्स को शांत कर देती है कि भाई शांत हो जाओ, कोई मसला नहीं बेटा, मिर्चें लग रही हैं, सूखे होता है इस तरह के कामों में. तो दाल मखनी आके बेचारी दलासा दे रही है टेस्ट बड्स को. पर अगेन फ्लेवर्स टोटली ऑन पॉइंट. Why don't we have restaurants like this in Canada?
और अगर है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार। कुछ डिफरेंट हो तो ब्लॉग करने में भी मज़ा आता है, जहाँ पे यू नो लाइक आप क्लीन बोल्ड हो जाते हैं कि यार फ्लेवर्स समझाएं किस तरह से, बट इन फ्लेवर्स को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लेवर्स ऐसे हैं कि यू नो हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क विज़िट कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, जुनून पे अगर आप नहीं आए तो यार मिस कर रहे हो, बहुत ही मज़े का खाना है। एक गलती हो गई, दाल मखनी इसके साथ मिक्स नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो दाल मखनी में ओवर पावर कर दिया है। जो अच्छा खासा उसका जो एक स्पाइसी टेस्ट था ना, वो अब नहीं आ रहा। सामने वाली टेबल पे एक आंटी बैठी हुई है, उनको लगता है मिर्ची बहुत ज़्यादा लग गई है, क्योंकि उनका जो वॉल्यूम है वो कुछ ज़्यादा ही लाउड हो गया खाना ख़त्म करने के बाद। पूरे रेस्टोरेंट में सिर्फ उनकी आवाज़ आ रही है सर। आपको भी आ रही होगी। Can't do anything about it. Compliments to the chef. Chef, if you're watching this, your restaurant Junoon shows the Junoon towards cooking, because again, एक जुनूनी बंदा ही हो सकता है who can bring these kind of fusion of flavors to life and put them on a plate in such beautiful presented way. Amazing food, chef. So I just asked him right now the name of the chef, वो दिमाग से निकल रहा था। Basically the chef's name is Chef Rajesh Bharadwaj. Apparently he's worked with Chef Sanjeev Kapoor also, and now he's opened up a second restaurant called Jazba in New York. So the Chef Bharadwaj, I think so he's a fan of जो हमारे पाकिस्तान के जो एक famous rock group था, Sufi rock group Junoon, because एक रेस्टोरेंट है इनका जुनून, दूसरा इन्होंने खोला है अब जज्बा, थर्ड होगा प्रॉब्ली सयोनी। सो आई थिंक वो जो गाने हैं जुनून के उसके नाम के ऊपर अपने रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं। सो एनीवेज, ऑल इज गुड। अगेन सेम मैसेज, स्प्रेड लव नॉट हेट। अगर आपको जुनून के गाने अच्छे लगते हैं, इट्स ऑल गुड, हमें आपके खाने अच्छे लगते हैं। बिफोर द डिज़र्ट कम्स आउट, they've given us a palate cleanser over here, which is basically a sorbet, and our friend over here is taking good care of us. So basically palate cleanser है, sorbet है coconut का, just to like get the taste buds all cleaned up to enjoy the Chico dessert जो भी आने वाली है। So coconut sorbet with cardamom as a palate cleanser at Junoon. ठंडा ठंडा शोरबे, एंड अगेन टेस्ट बहुत ही न्यूट्रल है। इट्स बेसिकली लाइक क्लीनिंग अप योर पैलेट, न्यूट्रलाइजिंग एवरीथिंग। वो जो स्पाइसेस थे, वो जो टैंगी टेस्ट था, जो स्पाइसी टेस्ट था, वो सब कुछ जो है जा रहा है, धुलता जा रहा है। एंड प्रेजेंटेशन के तो फुल मार्क्स नहीं है। लुक्स लाइक अ कैंडल विक, कैंडल है, उसके ऊपर एक विक डाली हुई है ऑफ द शोर में। वेरी नाइस। Our friend Mayank over here got the star dish of the night, the dessert. Ji Mayank, what do we have? So here we have the cricket. Okay. You know the favorite sports of Indian Pakistan. Yeah. So the grass is made with coconut flake. Coconut flakes, okay. The pitch is made with Parle-G biscuit and Chiku mousse. Parle-G biscuit, Chiku mousse. Wicket and ball made with the chocolate. Wicket and ball is made with chocolate. Amazing. Thank you. Thank you so much. I don't want to eat this. I just want to keep looking at it. It looks so pretty. Grass. Scrape off the grass mustard. All right. Thank you very much. Basically, recreated the whole cricket because again, India, Pakistan, we Asians are, like South Asians are passionate about cricket. जुनून है हमारे अंदर क्रिकेट का, तो शेफ ने अपना जुनून, आई एम श्योर ही इज़ अ क्रिकेट फैन एज वेल, तो शेफ भरद्वाज आई थिंक सो ही इज़ अ क्रिकेट फैन एज वेल। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जुनून जो क्रिकेट का है
obviously he must be busy in the kitchen because इतना अच्छा रेस्टोरेंट चलाना बच्चों का खेल नहीं है. So I'm sure he's busy in the kitchen. क्रिकेट खेलने का, क्रिकेट देखने का शायद टाइम ना मिलता उनको. तो उन्होंने जो उनका जुनून था, जो डिवोशन थी towards cricket, he's put it in the shape of a dessert on our plates over here. So देख सकते हैं हम कि how beautiful does this look? जो यहाँ पे ये जो ग्रास है पूरा, दिस इज कोकोनट फ्लेक्स. द पिच जो बनी हुई है इट्स बेसिकली पार्ले जी का बिस्किट का केक बना हुआ है. ऊपर चीकू मूस की लेयर है. द विकेट, द बैट एंड द बॉल आर मेड ऑफ चॉकलेट्स. लेट्स ट्राई द क्रिकेट. ये वो क्रिकेट चू चू करने वाला क्रिकेट नहीं है, इट्स क्रिकेट. Because that's what I was thinking. यार क्रिकेट तो नहीं खिलाएंगे, because you know क्रिएटिव शेफ है, क्रिकेट भी खिला सकते हैं, but नहीं. Let's try the cricket once again. थोड़ा सा पार्ले जी लिया हमने, पार्ले जी केक, थोड़ा सा चीकू मूस लिया, कोकोनट ग्रास लिया. White cricket dessert at Junoon. Chef Bharadwaj in New York City, USA. To you. The coconut is, you know, completely neutral. Neutral empire है इस डिश का. उसका अपना कोई फ्लेवर नहीं है, just for your decor, ग्रास बनाने के लिए. तो उसका अपना कोई टेस्ट नहीं है. But one thing that the coconut does, it kind of neutralizes the sweetness of the Parle G cake and the tanginess of the chiku mousse. The chiku mousse थोड़ी सी tangy है, थोड़ी सी खट्टी है, and then Parle G, you know, like Parle G का taste आ रहा है, you know, वो जो Parle G के बिस्किट्स जो चाय में डुबो के हम लोग खाते थे बचपन में, जो उसका टेस्ट आ रहा है. It's not overpoweringly sweet. बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया. I mean, I can finish this off easily. अब बैट की बारी. Oops. Looks like the बैट जो है, चले बॉल आ गया हाथ में, कल क्रिकेट बॉल से बातें कर लेते हैं. Then we take this cute looking bat. जो बॉल था, it was basically ऊपर जो कलर हुआ था रेड, अंदर में it was white chocolate. I'm guessing the bat is the same thing. बिस्किट है. These are like chocolate wafers. अंदर में black chocolate है, milk chocolate basically, और ऊपर white chocolate है. Excellent. अब जो है डिज़र्ट्स को प्रॉपर्ली ख़त्म करते हैं. एक शिकायत रहेगी, चीकू का टेस्ट नहीं आया. बिकॉज आई लव चीकू, वो टेस्ट नहीं आया मुझे. बट ओवरऑल द एक्सपीरियंस, द फूड, द एम्बियंस, द स्टाफ, एंड आई वुड से दैट अगेन, द स्टाफ बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे, वेरी अटेंटिव एंड नो कंप्लेंट व्हाटसोएवर. अगर आपके अंदर जुनून है टू ट्राई आउट न्यू फूड, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू फ्लेवर्स, जुनून है कुछ एक्सप्लोर करने का, कम टू जुनून इन न्यू यॉर्क सिटी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या खाया आपने, हाउ डिड यू फाइंड द फूड. बिकॉज फॉर मी द एक्सपीरियंस, द फूड was GOOD. So friends, उम्मीद है आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा. वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. Until next time, stay safe, stay healthy, take care. अल्लाह ने के बाद.